extrinsic semiconductor. Write down, लिखो, write down. First is pure semiconductor, or intrinsic semiconductor. Write down about that. First is pure semiconductor, pure semiconductor, pure semiconductor, or intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor, pure semiconductor or intrinsic semiconductor. What is that? You see, pure semiconductor or intrinsic semiconductor. What is that? अरे क्या आशीष बोलो, हेलो, ओके, लिखो, प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. व्हाट इज दैट? लेट्स स्टार्ट दिस. अरे आशीष, मैं क्लियर कर दूंगा बाद में. प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज दैट हियर? लुक हियर, राइट डाउन. All pure semiconductors are known as intrinsic semiconductor. All pure semiconductors are known as intrinsic semiconductor. देखो इसमें क्या है, सिलिकॉन इज टेट्रावैलेंसी इन स्ट्रक्चर. देयरफॉर सिलिकॉन में क्या है, समझा रहा था, सिलिकॉन में क्या है, टेट्रावैलेंसी है. नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सिलिकॉन. देयरफॉर इन द प्योर फॉर्म सिलिकॉन इज व्हाट? Silicon is a bad conductor of electric current. All what? All semiconductors at normal temperature or very low temperature, what will happen? They are bad conductor of electric current. Clear? ये है टेट्रावैलेंसी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? सिलिकॉन. इसको इसको व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे लिखा जाता है? सिंगल बॉन्ड को दो लो स्ट्रक्चर में लिखा जाता है. कैसे? देखो, सिलिकॉन एक बॉन्ड को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे. दिस इज सिंगल बॉन्ड. ये एक लोब है, ये एक लोब है. मतलब तुम्हारा जो ऑर्बिटल में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है. अंडरस्टैंड दिस? एक बॉन्ड को ऐसे लिखा जाता है, हुआ कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में? तो दिस इज व्हाट सिलिकॉन, दिस इज व्हाट सिलिकॉन, दिस इज व्हाट सिलिकॉन. ये स्ट्रक्चर लिखो एग्जाम में, ये स्ट्रक्चर लिखोगे एग्जाम में. तो दिस इज व्हाट टेट्रावैलेंसी स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन. So you see that in pure form, what will happen? The silicon or this semiconductor has no free electrons. Therefore, they are the bad conductor of electric current. इसको लिखो, ये डायग्राम को लिखो, ये डायग्राम करो, होगा कि नहीं? अरे ये डायग्राम करो एग्जाम में, ये नहीं. ये केमिस्ट्री में टेट्रावैलेंस से दिखा रहे हो, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में ये डायग्राम ड्रॉ करोगे. ये डायग्राम, write down, draw the diagram. This is the diagram of pure semiconductor. No free electrons are there in pure semiconductor. लिखो, ये डायग्राम ड्रॉ करो. अगर डायग्राम ड्रॉ किया तो ये बोलो, हो गया? ये डायग्राम ड्रॉ करो. ये यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन का सिंगल बॉन्ड हो रहा है. यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन है. दिस टू लोब इज अ सिंगल बॉन्ड हियर. अंडरस्टैंड दिस? हो गया? ड्रॉ कर दिए? ओके. अरे आशीष, तुम्हारा डाउट है, आई विल क्लियर दैट, डोंट वरी. इसके बाद क्लियर कर दूंगा. लिखो, राइट डाउन. In pure form of semiconductor, in pure form of semiconductor, due to tetravalence in nature, due to tetravalence in nature, due to tetravalence in nature, it is bad. Due to tetravalence in nature, no free electrons are there. No free electrons are there. No free electrons are there. Therefore, it is bad conductor of electric current. Therefore, it is bad conductor of electric current. Bad conductor of electric current. However, write down, however, on increasing temperature,
However, on increasing temperature, however, on increasing temperature, the thermal energy of valence electron increases. However, on increasing temperature, the thermal energy of the valence electrons increases. Thermal energy of valence electron increases. So कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड एक ब्रेक होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड रिलीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होके रिलीज व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, रिलीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स which conduct electric current, which conduct electric current, which conduct electric current. These free electrons, these free electrons leaves behind a vacancy in the covalent bond. These free electrons, these free electrons leaves 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 behind a vacancy, leaves behind a vacancy in the covalent bond, in the covalent bond. This vacancy of an electron is called a hole, is called a hole or positive charge, called a hole or positive charge, होल और ए पॉजिटिव चार्ज। वाह देखो, ये ऑन गिविंग थर्मल एनर्जी, इसको अगर मैं थर्मल एनर्जी दूं, टेम्परेचर इंक्रीज करूं, तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑन ब्रेकिंग कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। ऐसे बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड एक साथ ब्रेक होगा, ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम दिस वन। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन तो चला गया, यहीं पे खाली हो गया, दिस space, this vacant space is known as hole, and holes are basically positive charge। तो एक होल को छोड़ के जा रहा है ये, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना है, नंबर ऑफ होल्स भी उतना है। इन दिस केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल नंबर ऑफ होल डेंसिटी। अंडरस्टैंड दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना है, नंबर ऑफ होल डेंसिटी उतना है। तो इन प्योर सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल नंबर ऑफ होल डेंसिटी। n है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, nh है नंबर डेंसिटी ऑफ होल, एंड दिस इज नोन एज नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। यहाँ पे दो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, होल्स भी है। अरे इलेक्ट्रॉन एक निकल रहा है तो वहां पे एक होल क्रिएट हो रहा है, तो वी कैन से दैट व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज नंबर ऑफ होल, जस्ट लाइक ए मेटल। मेटल में क्या हो रहा था, अरे मेटल में क्या हो रहा था, नंबर टोटल चार्ज ऑन द मेटल इज जीरो, यहीं पे भी टोटल चार्ज जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी सेल में था वही जंप करके मूवमेंट कर रहा था, एंड दैट गिव्स ओशन ऑफ व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, ओशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है, होल्स ऐसे जा रहे थे, एग्जैक्टली वे यहीं पे भी वही होगा। On increasing temperature, when the covalent bond starts, this is purely behaving like a conductor, purely that behaves like a conductor. That means electron is moving in forward direction and the hole is moving in backward direction। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, होल भी वैसे वैसे बैकवर्ड जाएगा। अरे समझ में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज नंबर ऑफ होल्स हियर। तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर क्या है, नंबर ऑफ व्हाट, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। तो लिखो यहीं पे, write down here, in pure semiconductor, in pure semiconductor, in pure semiconductor, the number density of free electron, any, in pure semiconductor, the number density of free electron, any, is always equal to the number density of holes, is always equal to the number density of
holes. Number density of holes. Therefore, the intrinsic charge carrier, in pure semiconductor, the intrinsic charge carrier in pure semiconductor is given by Ni is equal Ne is equal Nh. The intrinsic charge carrier in pure semiconductor is given by Ni is equal Ne is equal Nh. Very important. Very very important. ये कितना है एग्जाम में? किसी का क्वेश्चन है? Therefore, in pure semiconductor, write down. Therefore, in pure semiconductor, the intrinsic charge carrier, the intrinsic charge carrier, the intrinsic charge carrier concentration भी लिख सकते हो. The intrinsic charge carrier Ni is equal Ne is equal Nh. Ni is equal Ne is equal Nh, or we can say Ni square is equal Ne into Nh. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर प्रॉब्लम गिरता है 2 मार्क्स का. Ni square is equal Ne into Nh. That is what? Number density of intrinsic charge carrier. Number density of intrinsic charge carrier. Understand this? Ni square is equal Ne plus Nh. Is that clear? Next is your impure semiconductor or doped semiconductor. क्या है? लिखो. कुछ क्वेश्चन पूछना है यहीं पे? अरे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है, बोलो. एनीथिंग टू आस्क हियर? किसका डाउट है? कुछ क्वेश्चन पूछना है यहीं पे? हेलो, कुछ क्वेश्चन पूछना है यहीं पे प्योर सेमीकंडक्टर में? किसी का डाउट है? नहीं है? आगे बढ़ें. ओके. नेक्स्ट नंबर 2 इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और impure semiconductor. Write down. Impure semiconductor और extrinsic semiconductor. नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और impure semiconductor, impure और doped semiconductor और doped semiconductor. Doping है. Doping means what? अरे doping means what? Adding impurities. Adding impurities or doped semiconductor. Doped semiconductor. Intrinsic or impure or doped semiconductor. Write down. All impure semiconductors are known as doped semiconductor or extrinsic semiconductors. All impure semiconductors are known as extrinsic semiconductors. All impure semiconductors are known as extrinsic semiconductors. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? प्योर सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ नो यूज. क्यों? क्यों नहीं? अरे प्योर सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ नो यूज. व्हाई? because they are no free, there are what, they don't have any free electrons, therefore difficult for conduction अगर नहीं हो रहा है तो we cannot take that in what, physics. But if you give thermal agitation, uncontrolled current you are going to get. We need control current, but when you are giving thermal agitation, uncontrolled current you are going to get. अरे पहले current zero था, अभी uncontrolled current हो गया. Therefore pure semiconductors are of no use. Disadvantage है. Impure चीज यहीं पे important है. अरे डे टू डे लाइफ में impure चीज का कोई जगह ही नहीं है, बट यहीं पे impure चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है. देखो, एक्सट्रिंसिक और impure और डोप सेमीकंडक्टर हो गया. ऑल impure सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज डोप सेमीकंडक्टर. लिखो डोपिंग क्या है. लिखो व्हाट इज डोपिंग. राइट डाउन. डोपिंग क्या है? डोपिंग इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग. अरे डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आजकल यूज हो रहा है. लिखो डोपिंग. The process of adding impurities, the process of adding impurities such as trivalent or pentavalent, such as trivalent or pentavalent, trivalent and pentavalent to a pure semiconductor, trivalent or pentavalent to a pure semiconductor is known as doping.
is known as doping. Why trivalent and why pentavalent? We shall see later on. Trivalent or pentavalent is known as doping. Write down. The impurity atoms added are called dopants. तो ये trivalent, pentavalent है dopants. Dopants है ये, dopants. Write down. The impurity atoms added are called dopants. Dopants. The impurities added are called dopants. And the semiconductors doped with the impurity and the semiconductors doped with the impurity atoms are called extrinsic or doped semiconductors. Extrinsic or doped semiconductors. So semiconductors dope with impurity. Impurity atoms are called doped semiconductors. मतलब सिलिकॉन, जर्मानियम, these are what doped semiconductor. अगर अरे सिलिकॉन में impurities ऐड कर रहे तो ये डोप सेमीकंडक्टर हुआ, ये हुआ डोपेंट. ये दोनों मिलके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया. The impurities, the semiconductors doped with the impurity atoms are called extrinsic or doped semiconductors. Write down. Understand this. अरे समझ में है? लिखो. So, what is the advantage of this trivalent and pentavalent doping and how this can be done? This can be done by crystal defect. Crystal defect ये एक blessing है. अरे तुम्हारा केमिस्ट्री किंगडम में क्रिस्टल डिफेक्ट बहुत ब्लेसिंग है. फिजिक्स में काम का चीज है क्रिस्टल डिफेक्ट. हाउ मेनी डिफेक्ट्स आर देयर इन द क्रिस्टल? अरे हाउ मेनी डिफेक्ट्स आर देयर इन द क्रिस्टल? हु कैन से? अज़द अली बोलो. आजकल पर रेगुलर आ रहे हो. अरे अज़द अली, हेलो. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाट डिफेक्ट्स आर देयर? बोलो अज़द. अरे फिजिक्स तो नहीं पढ़ते हो, केमिस्ट्री तो सब तो इंटेलिजेंट हो. सच्चियो पी टाइप एन टाइप डिफेक्ट नो. अरे क्या है प्रीतिश बोलो. अरे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर इन केमिस्ट्री? फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, खतरनाक तरीके से आंसर दे रहे हो सर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर? प्रभुदत्ता बोलो. हेलो. सच्चियो नॉन सच्चियो नो. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर? बोलो. टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. अरे क्या अनमोल? अरे अनमोल बोलो. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स? फ्रैंकलिन डिफेक्ट एंड स्कॉटी डिफेक्ट. याद आया कुछ? अरे केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ते हो? मैं सोचा फिजिक्स ही नहीं पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ रहे हो. अरे फ्रैंकलिन एंड स्कॉटी डिफेक्ट याद है? अरे 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर. 6 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. सौम्या 6 लिखे हो. हेलो. अरे फ्रैंकलिन एंड स्कॉटी डिफेक्ट कभी सुना है केमिस्ट्री में? दैट डिफेक्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. मतलब पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर देखोगे तो इसी टाइप का बीच में ये तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ऐसे सब कोवलेंट बॉन्ड हो गया, बीच में खाली जगह मिलेगा. ये डिफेक्ट है. अरे समझ में है? ये बीच में जो खाली जगह मिल रहा है इसमें हम एक एटम डोप कर पाएंगे. सोचो ये सब सिलिकॉन है, ये सब सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन एटम दे फॉर्म फॉर टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर एंड बीच में ये खाली जगह मिल रहा है. दैट इज व्हाट द डिफेक्ट इन क्रिस्टल. एवरी क्रिस्टल हैज अ डिफेक्ट. क्लियर? एवरी क्रिस्टल हैज अ डिफेक्ट. तो बीच में खाली जगह मिल रहा है तो बहुत सारे सिलिकॉन में एक एटम हम डोप करेंगे, इधर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट. क्लियर? कैसे डोप करेंगे? तो पहले ये पूरा सिस्टम को, ये पूरा क्रिस्टलिटी स्ट्रक्चर को बहुत जोर से हीट करेंगे. व्हेन इट विल हीट द कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट टू ब्रेक होके these atoms are moving away from each other. Now a single atom of trivalent or pentavalent is doped now. इसको ऊपर से छोड़ा जाता है.
जब ये बहुत जोर से हीट होता है तो स्लोली ये अंदर जाता है, जब यहीं पे आ जाता है इमीडिएटली वी आर कूलिंग दैट। यहीं पे जब ये एटम इंसर्ट हो जाता है वी आर कूलिंग दैट। व्हेन वी आर कूलिंग द एंटायर क्रिस्टल देयर इज व्हाट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन ऑल दीज एंड अगेन वही व्हाट टेट्रावेलेंट अगेन डेवलप हो रहा है एंड ये जाके यहीं पे इंसर्ट हो रहा है। दिस इज नोन एज डोपिंग प्रोसेस। सुनने में बहुत इजी लग रहा है बट ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। अंडरस्टैंड दिस और नॉट? तो बहुत सारे एटम में एक एटम डोप किया जाता है, जो वो डिफेक्ट स्ट्रक्चर है, वो सेंट्रल डिफेक्ट स्ट्रक्चर है, स्कॉटी हो या चाहे फ्रैंकलिन डिफेक्ट हो, वह एटम को चूज करके यहीं पे इंसर्ट किया जाता है। एक एटम, बहुत सारे सिलिकॉन एटम है, सिर्फ एक एटम को डोप किया जाता है ताकि वी कैन गेट दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। According to trivalent or pentavalent what doping, we are getting what holes are what electrons, free electrons or holes we are getting. How? We shall see later on. But this is the process of doping. Understand this? Doping में जब doping करोगे that semiconductor must be pure almost 99.99. Clear? The dopant atom should neatly replace the semiconductor atom. Easily it can be replaced. Understand this? The size of dopant should be what? Very very same as that of semiconductor atom. Silicon का जो size होगा इसका भी same size होगा जो dopant का. Understand this? Like this we have to choose. Write down. Now write down. For dopant, following write down following लिखो following characteristics of the dopant should be taken. लिखो following characteristics of the dopant should be taken while doping. Following characteristics of dopant should be taken. Following characteristics of the dopant should be taken while doping. क्या क्या देखो number one the dopant atom should neatly replace the semiconductor. The dopant atom should neatly replace the semiconductor. Should neatly replace the semiconductor. Number two, the size of the dopant should be almost the same as that of semiconductor atom. Almost the same as the semiconductor atom. Almost same as that of semiconductor atom. Therefore, dopant should be taken from third and fifth group of the periodic table. Therefore, dopant should be taken from third and fifth group of the periodic table. Next point, write down. The dopant atoms should not disturb the crystal lattice. The dopant atoms should not distort, D-I-S-T-O-R-T. The dopant atom should not distort the crystal lattice. Should not disturb the crystal lattice. Understand this? ये सब characteristic होना चाहिए dopant का. Clear? Next, types of impure semiconductor or extrinsic semiconductor. According to the dopant, two types of what? Extrinsic semiconductors are there. लिखो, according to the dopants, extrinsic semiconductors are of two types. According to the dopants, extrinsic semiconductors are of two types. Number A, N-type semiconductor. N-type semiconductor. N-type semiconductor. B is a P-type semiconductor. P-type semiconductor. P-type semiconductor. Write down. N-type semiconductor is what? N-type semiconductor and P-type semiconductor. Understand this? अरे समझ में? हेलो बोलो.
थर्ड एंड फिफ्थ फिफ्थ ग्रुप ना, अरे 13 एंड 15 नहीं है, थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप। बेसिकली थर्ड में ट्राइवेलेंट मिलेगा, फिफ्थ में पेंटावेलेंट मिलेगा, 13 15 नहीं है। अरे थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, थर्ड में मेरा ट्राइवेलेंट मिलेगा, फिफ्थ ग्रुप में क्या मिलेगा, पेंटावेलेंट मिलेगा। अरे समझ में है कि नहीं? हेलो, मुझे पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट की जरूरत है। हाँ एल्यूमिनियम, नो प्रॉब्लम, एल्यूमिनियम को छोड़ो, बाकी नीचे जो है उसी को लोगे। 13 एंड 15 में क्या हो रहा है, वहां पे जो ट्रांजिशन जो मेटल्स के बाद जो आ रहा है, वहां पे प्रॉब्लम है, डोपेंट का काम नहीं करता है। इसलिए बेसिकली थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप आर व्हाट टेकन फॉर दिस व्हाट डोपिंग प्रोसेस। अरे थर्ड एंड फिफ्थ एल्यूमिनियम है, उसमें क्या है बोलो? अरे ट्राइवेलेंट में क्या है, इंडियम है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, यस दे आर टेकन दिस वन। एंड फिफ्थ ग्रुप में क्या है, फिफ्थ पेंटावेलेंट में क्या है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। दीज आर टेकन फॉर द व्हाट पर्पस, अंडरस्टैंड दिस? अरे समझ में आया कि नहीं? हेलो, इसलिए थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप आर टेकन, नॉट 15th ग्रुप, अंडरस्टैंड दिस? थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप, अंडरस्टैंड दिस? Third and fifth, 3 and 5. Okay. P-type semiconductor. Now write down. First is N-type semiconductor. Write down. N-type semiconductor or trivalent doping. Trivalent. N-type semiconductor. N-type में क्या है? Pentavalent doping होना चाहिए. लिखो. N-type semiconductor. लिखो. When a pure semiconductor is doped with, write down. When a pure semiconductor is doped with pentavalent elements like arsenic, antimony, phosphorus, etc. Arsenic, antimony, phosphorus, etc. 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 Repeat. Suman, okay. Write down. When a pure semiconductor is doped with pentavalent elements like arsenic, antimony, and phosphorus, N-type semiconductor results. N-type semiconductor results. N-type semiconductor results. इसमें क्या हो रहा है? N क्यों की बोला गया है? N means negative extra electron will be there. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एन टाइप बोला जाता है इसको। देखो सिलिकॉन है, दिस इज व्हाट सिलिकॉन, पेंटावेलेंट सपोज क्या दिया एग्जांपल, आर्सेनिक, मेरा आर्सेनिक यहीं पे रख दिया, यहीं पे सिलिकॉन है, जो मेरा क्रिस्टलिटी स्ट्रक्चर डिफेक्ट जो बताया था, ये डिफेक्ट में आर्सेनिक आ गया, अभी इसके अंदर आर्सेनिक आ गया। तो व्हाट विल हैपन व्हेन आर्सेनिक इज देयर, तो व्हाट विल हैपन, यू सी सिलिकॉन ये पूरा अभी पैक हो गया, व्हाट क्रिस्टलिटी स्ट्रक्चर। आर्सेनिक का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट here, this free electron is left here, understand this? This free electron is responsible for what, responsible for conductivity. As one extra free electron is left here, therefore it is known as n type semiconductor. इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, therefore it is known as n type semiconductor. But this n type semiconductor is electrically neutral. ये नेगेटिव नहीं है, बट एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर, therefore ये नेगेटिव लिखा जाता है। उसका मतलब ये नहीं सेमीकंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज। अरे समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं सेमीकंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज, सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो एन क्यों लिखा गया? एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव बिकॉज एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज responsible for charge carrier, therefore it is known as n type semiconductor. This is what free electron, this is responsible for what, conduction of electric current.
एज फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर देयरफॉर एन टाइप है, अभी कोई थर्मल एजिटेशन की जरूरत नहीं है, तो इजीली इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ द डायग्राम, एंड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ड्रॉ द डायग्राम। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सुनना है अच्छी तरह, थ्योरी थ्योरी है, इसे अच्छी तरह सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। So like this, the conductivity increases. हो गया? अरे लिख दिया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो ये सोलो ड्रॉ कर दिया डायग्राम। ये डायग्राम सब इंपॉर्टेंट एग्जाम में ड्रॉ करोगे। हो गया? अभी देखो, here one extra electron is there, therefore the number density of electron is much more greater than the number density of holes। क्योंकि मैं एक डोपिंग कर रहा हूं, मैं तो एक डोपिंग नहीं करूंगा ना, मिलियंस डोपिंग करूंगा। अरे एक क्रिस्टलिटी स्ट्रक्चर में बहुत सारे मैं डोपिंग करूंगा, हुआ कि नहीं? Therefore number density of electron is much more larger than the number density of holes। Therefore in this case we can say that electrons are the majority charge carriers while holes are the minority charge carrier। Electrons are the majority charge carrier here and holes are the minority charge carrier here। बहुत सारे डोपिंग करूंगा ना, अरे ये एक में दिखा है, ऐसे मिलियंस ऐसे डोपिंग करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वाह, तो जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ेगा एंड होल्स भी क्रिएट होगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड देयरफॉर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मोर ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। वाह, एक एक करके लिखो, एक एक करके लिखो, इसी में लिखो। ऑन एडिंग pentavalent impurities, on adding pentavalent impurities to the pure crystal, to the pure crystal, one free electron is left, one free electron is left, which is responsible for conduction of electric current, which is responsible for conduction of electric current, electric current, electric current. When large number of pentavalent elements are doped, when large number of pentavalent elements are doped, the number of electron density also increases, the number of electron density also increases, the number density of electrons also increases, therefore electrons are known as majority charge carriers, therefore electrons are known as majority charge carriers, while holes are known as minority charge carriers. Electrons are known as majority charge carriers, while holes are known as the minority charge carriers. That is, write down, that is, number density of electron is much more greater than number density of holes. Number density of electrons is much more greater than number density of holes. This is what about your what? N-type semiconductor. Clear? इसका schematic diagram क्या है? Write down schematic diagram of N-type semiconductor. Schematic diagram एग्जाम में ड्रॉ करोगे। Schematic diagram.
What is that? Schematic diagram क्या है? So this is what a semiconductor, n type semiconductor एक क्रिस्टल है. क्रिस्टल में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखना है और कुछ नहीं है. तो व्हाट इज दैट हियर? लुक हियर, दैट इज व्हाट हमारा इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ऐसे ऊपर लिखा जाता है यहीं पे, प्लस बहुत सारे प्लस ऊपर ऐसा लिखा जाता है, बहुत सारे प्लस ऊपर ऐसा लिखा जाता है. इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. अंडरस्टैंड दिस? जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है यहीं पे ऊपर लिखा जाता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. वाह, दिस इज व्हाट एन टाइप सेमीकंडक्टर सिंबलिकली लिखा जाता है. एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये स्कीमेटिक डायग्राम है. क्लियर? दिस इज द डोनर कोर, इसको बोलते हैं डोनर कोर. ये डोनेट कर रहे हैं ना, तो डोनर कोर. एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. these are the free electrons, free electrons. Yes, schematic diagram. Therefore this shows that n type semiconductor is electrically neutral, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये कभी नेगेटिव नहीं है. और इसको कुछ बुक में ऐसे भी लिखा जाता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है इसमें? अरे एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो ऐसे भी लिखा जाता है. इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करके होल को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लिखा जाता है. मतलब बीच में एक एक होल, नंबर डेंसिटी ऑफ होल ऐसे कम लिखा जाता है. ऐसे भी लिख सकते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर को, नो प्रॉब्लम विल बी देयर. तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. बट यहीं पे स्कीमेटिक डायग्राम में ये पॉजिटिव को नीचे जो ऊपर जाएगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. वाह, this is the way we can represent what n type semiconductor. n type semiconductor, n type semiconductor is electrically neutral. बहुत इंपॉर्टेंट लिखो, why एग्जाम में पूछता है. why electric what n type semiconductor is electrically neutral. लिखो, n type semiconductor is electrically neutral. n type semiconductor is electrically neutral. n type semiconductor is electrically neutral. Why it is neutral? Tell me. Why it is neutral? Because silicon is electrically neutral. जो मैंने डोप किया, यहीं पे जो डोप किया, क्या ये सिलिकॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था? ये सिलिकॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. आर्सेनिक जो डोपिंग भी हो रहा है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. न्यूट्रल को न्यूट्रल से डोपिंग किया जाता है, कोई एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस नहीं है. देयरफॉर एंटायर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अंडरस्टैंड दिस और नॉट? अरे मैंने जो सिलिकॉन को ऐड किया वो इलेक्ट्रिकली, जो सिलिकॉन था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एंड आर्सेनिक जो ऐड कर रहा हूँ वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. देयरफॉर व्हाट इज हैपन, व्हाट विल हैपन? एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट इज नॉट नेगेटिव. राइट डाउन, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अंडरस्टैंड दिस? समझ में? नेक्स्ट, इसको अभी